je vais parler de ma vie à l'école. À l'école. À l'école. Je commence mes études quand, quand, euh, quand j'étais 3 ans dans mon pays. When you talk about your age, generally we use avoir. Generally, not all the time we use avoir. J'avais 3 ans. J'ai J'avais commencé 3 ans. ma vie scolaire quand j'avais 3 ans. Très bien, America. Oui. Okay. So, je commence mes études euh, dans l'école, dans l'école, euh, l'éc- dans ma like, ville, Dans ma ville. Oui, bien sûr. dans ma C'est ville. correct. Euh, j- j'ai- j'étais, j'étais raconté avec mes amis à l'école. Euh, j- jamais, jamais, jamais jamais et- mes professeurs parce que il était très gentil. So it's not jamais, it's jamais. Jamais. I Jamais, used to like, I used to love. Okay. jamais. Oui, oui, bien sûr. Euh, ok, j'étais apprendre différents sujets comme l'anglais, euh, mathématiques, mathématiques et autres Science, sujets. science, oui. You learn science. J'étais après, j'avais après les sujets comme sciences, mathématiques, politique, whatever. Yeah, oui. Yeah. D'accord. Mais je n'aimais pas, Mhm. je n'aimais pas l'histoire parce que, parce que je, je, je trouvais, Yeah, yeah. euh, Mhm. J'ai trouvé. je trouvais ça difficile à, remember like Ah, dates. je trouvais le sujet très difficile à mémoriser ou Mémoriser les mémoriser. dates. Ah, les dates, oui, oui, bien sûr, les dates, les jours, Mm, les détails, bien sûr, oui, mm. c'est vrai pour moi aussi. Nitika, je suis bien d'accord avec vous. Ok. Euh, ma, 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 ti- ma sujet préféré était l'anglais Mhm. car, 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 car j'étais, euh, car j'étais très intéressant Oui, oui, oui. pour moi. Intéressant pour moi. Euh, और je, je, je jouais avec mes amis pendant temps de récréation. 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 Euh, mais, mais, euh, mes étudiants, jamais, jamais moi, parce que, euh, parce que, parce que j'étais très, très bien dans ma étude. Dans ma étude, oui, Étude. oui. Vous êtes le topper, vous étiez le topper dans la classe, n'est-ce pas? Yeah. D'accord, j'ai bien compris. D'accord.
um, uh, okay. J'étais prendre, okay. J'étais, Mhm. j'étais, j'étais prendre, Je- j'étais, what is the I used to take participate. Oui, je participais. I used to Je, participate. Oui, je participais je dans participais, les événements, dans les rôles de drama. Oui, oui, d'accord. Continuez. j'ai participé dans différentes compétitions. Compétition. Bravo. Sorry, j'ai préféré participer dans cette compétition euh, pa- euh, euh, Oui. parce que j'aimais apprendre euh, nouvelles, nouvelles choses. Mhm. Parce que nouvelles choses. Ok. J'ai complété ma lycée, Mhm. euh, ma lycée dans, euh, quand, euh, quand J'avais. j'ai, quand, quand Award. j'avais, Age की बात कर रहे हो ना? I think. yeah, जावेद now age award. Oui. quand j'avais, Oui. quand j'avais, euh, Tentative. You can say. Number. euh, Quand j'avais. 15 ans. Oui. Quand j'avais 15 ans. Yeah. Après compléter ma lycée, Mhm. j'ai, euh, j'ai, I joined, Mhm. j'ai, J'ai joigné. J'ai j'ai, joigné और j'ai भी participé. J'ai joigné. What exactly you are saying? Depending on that. I joined like university or college, कुछ ऐसा. Yeah, j'ai commencé avec mon baccalauréat. That is Yeah, what it means, right? J'ai commencé avec mon baccalauréat après le lycée, bien sûr. Et c'est quoi le lycée? Lycée, c'est une étape. like kinder school like 10th तक जो होता है. Lycée is votre high school, basically. इंडिया में क्या होता है high school? 10 + 2 तक होता है क्या? +2 तक. Right? That's high school. So that's lycée en français. Et après ça, il commence à préparer pour le bac. You know, le système éducatif est très différent en France. C'est pas exactement comme moi. Parce que, il commence, d'écrire quand vous allez, passer les autres, passer avancer avec les autres, les nouveaux. जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो numbers are going to go down, like 5 के बाद 4 3 2 1 0 ऐसे it goes down. That's how it is designed, but not कहाँ exactly पे? that simple. In France, अच्छा. I don't know about Canadian, but about I'm saying about France, it is like that. Okay. D'accord, not a problem. Lycée is high school, and go through baccalaureate is more. You prepare for bac, and then you go to university. There are multiple streams. So yeah, baccalaureate is your higher studies. Yeah. Okay. Grass, grass are maize एतुदियात. सर just because of them को कैसे बोलेंगे? क्या क्या come again? Sorry. जैसे grass are maize एतुदियात. Like just because of them, you know, That's the whole explanation. Grâce à mes études, right? Thanks to my studies. Grâce à, thanks to. Whenever there is a positive expression, we use grâce à. C'est une bonne expression à utiliser en français. Grâce à mon professeur, j'ai passé l'examen. Grâce à mes amis, je sens très safe, secure dans la classe, etc. So grâce à mes études, grâce à mon étude. Okay, what's next? What is the outcome? Add it. grass are mosetude, Monitude liaison. monitude. Mhm. Um, j'ai Succès, j'ai succès, or you can say j'ai réussi.
réussi. Yeah, j'ai réussi mes like difficile examens Les examens the difficiles, adjectif examen बाद में. Yeah, it's okay. mes examens difficiles Mhm. et j'ai travaillé Mhm. j'ai travaillé dans bonne entreprise. Dans une bonne place, dans une bonne entreprise. Oui, bien sûr, les études jouent un rôle important. Nous avons déjà discuté ça dans notre dernière classe dans speaking, right? So, vous avez bien compris que l'étude c'est très important et l'étude, le vie que le développement de personnalité que nous devenir, nous gagner dans notre vie scolaire, c'est très important. L'effet de ça et dans notre vie, bien sûr, c'est ça, n'est-ce pas? C'est Oui, ça. oui, exactement. D'accord, Nitika. Vous voulez continuer? Ajouter plus de choses? C'est fin? Yeah. C'est la fin. D'accord, c'est la fin pour Nitika. Oui, merci beaucoup Nitika. Vous avez ajouté beaucoup de choses. Vous avez parlé de toutes les choses qu'on peut penser à propos de notre vie scolaire. C'est pas comme toi, comme toutes les personnes se topper, mais oui, nous avons fait bien aussi. Pour moi, je ne suis pas un topper dans ma classe, mais oui, j'ai passé bien. J'ai juste passé l'examen. Et oui, c'était comme normal, comme les autres. Oui. Abiodun, Sajwir, voulez-vous parler? Voulez-vous ajouter votre point de vue, point de pensée, votre topic, votre vie avec nous? Sajwir Guru, d'accord. Yeah, I write something. Oui, bien sûr. Yeah. Nous allons vous écouter. Ma vie scolaire, Scolaire, ma scolaire, scolaire, ma vie scolaire est- était très agréable. They are A1 learners, so agréable. don't mind. A1 Yeah. wale, they find it difficult. So Veer and Abhyudun, they are at A1. So it's not a problem. Whatever they say, it's great. Okay. Um, J appreciate Mm-hmm. Chuck Shak. any Shakani. Chuck any the ma Scholarity. scholarit, yeah. Dipu le Dibu Nidika, can you correct just her? Jafi, she's making mistake with phonetics. Would you be able to do that? What is I'll debut? try. Debut sense. You're saying W, Satvi? I say Depu le Debu. Depuis. She's saying depuis. See? Yeah, Debut. Not it's debut. since Yeah. it's Depuis. it's since, yeah. Yeah, phonetics पे ध्यान दीजिए. So That speech phonetics is very that important. Correct, accurate okay. sound should be coming. Otherwise, we can Depu confuse the with multiple words. There are many more words with the pui sounding similar, the pui, dupui, and all. Yeah, go ahead. Depuis le Debu Debut. This one is debut. début début jusqu'à la dix classes, les professeurs étaient Atteint. So étaient you could have used Ete. present tense. Just present tense you guys could have used to tell, like it's happening right now. Rather than going in passé composé and parfait, you should. I've sent, A1 A2 standard text to also to you, Satvi. Hein? WhatsApp group में I have shared it. J'ai partagé avec vous. yeah Pour les yeah débutants. Donc, vous yeah considérez comme vous êtes, là à ce moment, Say the things in present. It would be better. It's okay. Okay? okay You can just, okay chalo.
अभी read out कर दो, but try to say the things in present, even though it was a Okay. intentionally chosen topic for passive composés, so that I wanted others to use, like, to use passive composé and am parfait, Nitika and all these people. Okay. So इनके लिए मैंने सोचा था that's the reason I chose this topic. Okay. Okay. But you can say the things in present or whatever you have written. Let's complete that. Yeah. Yeah. Les professeurs étaient très serviables et attentionnés. Mhm. I mean to say, Yeah, we understand. yeah, You okay. understand the meaning. J'ai étudié toutes les matières, Métier. mais les mathématiques étaient ma matière préférée. Mhm. Mathematics Uh, was your favorite. yeah, Uh, yeah. J'ai j'ai- j'avais j'avais beaucoup d'amis et J'avais. d'ou- I used to have. J'avais beaucoup des amis. Okay. j'avais beaucoup d'amis et d'entre eux sont toujours en contact avec moi. Mhm. This I didn't understand. Sorry. I didn't understand the last. Actually, I have lots of friends, Mhm. and two of them are still in my contact. I had a lot of friends, and two of them are still Yeah, in my contact. Okay. yeah, yeah, yeah. Nous avons fait beaucoup d'activités dans différents événements Maybe. comme la danse, la mimique, etc. Nous avons aussi joué ensemble Ensemble. à différents jeux comme caché, le coco, etc. Okay. Coco. Yeah. Acha. Yeah. Ce sont des moments inoubliables pour, pour moi. What is the spelling? Involable. What is? INOUBLIABLES. Anuvab. Yeah. Unforgettable. Okay. Okay. Yeah. ये word spelling note कर लो नितिका, you also, you don't know. Annualable, I think. Unforgettable. Unobviable. Can you repeat once again? एक बार spell कर दो. INOU, I think. Right? INOUBLIABLES. Okay. Basically annubliable. Inoubliable. Inoubliable. अच्छा, it's inoubliable. Inoubliable. Okay, Nitika is saying correct. The other, the pronunciation should be like this. Inoubliable. Inoubliable. It's coming from oublier verb, right, Nitika? Oublier. Noublier. Noublier is like हम Oublier or like noublier. to forget. Inoubliable. Oublier is to forget, and inoublier is to oublier is to forget. No? Unforgettable. Noublier to forget. Unforgettable. Yeah. Oublier is the verb means to forget something. But if you say inoubliable becomes something negative. मतलब उसका opposite का negative ना. Forget को unforget कर देना. Unforgettable basically. जैसे legal, which is legal. Illegal, illegal. Right? Croyable, believable. Something which we can believe on. Croyable, incroyable. So just like that, negate करने के लिए we add in generally, not always, but lot of cases. We add in to make the meaning opposite term, just making sense at the other point.
top, right? So believable, unbelievable, right? Forgettable, unforgettable. So for forgettable, it's obligable, right? Oubliable, we Obligable. something which we Obligable. can forget easily. Yeah. Add on more sentences. Satveer. We'll wrap it up quick क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है. Close. मैं तो अभी Satveer, वोकेबुलरी लिखने लगी हूँ जो आपने भेजा ना उसमें B1 B2 का. yes, why not? I mean, it's good. They add कर सकते हो. If you don't know, you must know, right? Because that whatever I've shown, it's very basic. Not that. It's around B1, B2 standard. Ok. Satveer ji, vous avez les autres phrases à ajouter? और Satveer, can we first start with present tense? You tell me कि कितने दिन स्कूल जाते हो? Just an imaginary idea, you know, like how what subject you study. Just go in present, na? It would be much Yeah. better for you. मैं आपको सैंपल लेट मी स्पीक इट फॉर फ्यू मिनट्स फ्यू लाइंस फॉर यू तो आपको आइडिया लगेगा कि हाउ वी कैन डू दिस इन प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल bonjour, je m'appelle Gian, je vais parler de ma vie scolaire. Euh, dans ma vie, il y a beaucoup des étudiants et moi j'ai beaucoup des amis dans ma école. Je vais à l'école 4 jours ou 5 jours par semaine. Euh, j'étudie l'anglais, le français, le mathématique, etc. Ma sujet préféré, mon métier préféré, les mathématiques, right? इस तरह से बोलो बस simple sentences, right? Il y a 4 personnes, il y a 5 professeurs और enseignants dans ma école, right? Mon préféré est Monsieur Ramesh parce que il est très gentil, il est, you know, just imaginary ideas, right? Getting it? Simple sentences in present, it's good. Start with present, you know. You don't go in passive composite, but you already have seen a lot of examples, Satveer. Yes, actually, I because of the topic, I think it should be in the past. Yeah. It should be in the past. I understand that. I understand the logic. That's why I chosen this topic for advanced learners because since last 4 speaking classes, we were taking very simple topics, or all of them were mostly in present. So I intentionally designed it so that we could have a chance to use, you know, passive imperfect, etc. may by the problem जब भी इस तरह के डिफिकल्ट टॉपिक्स हो सतवीर जनरली तो भी आप प्रेजेंट यूज कर सकते हो. ठीक है. आप मान लो कि यू आर अभी राइट नाउ अ स्टूडेंट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ करंटली हाउ इट्स गोइंग. सो वो सारे आइडियाज को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दो. वट एवर हैपेंड यू कैन जस्ट टेल इट इन प्रेजेंट. ठीक है. And even Satveer, your past ideas can be said in present. You guys understand that? Can we use present tense to tell past events? I don't want to confuse you guys, but I'm just saying, think over it. And how does it make difference if I start saying something that happened and now I'm saying in present? ड्रामा देखा है? थिएटर ड्रामा हिस्ट्री स्टोरी कैसा होता है? 1500 साल पुराना, 500 साल पुराना, राइट? 500 AD BCS इस तरह का पुराना स्टोरी, रामायण महाभारत ड्रामा वाराणसी में यू सी एंड वो लाइव होता है, राइट? प्रेजेंट टेंस और पास्ट कंपोजिट. प्रेजेंट में The story is in passive composite, but we are using present. So how you sound if you say passive composite or present? It sounds dramatic. लगता है थिएटर में बैठे हैं. You get it? So you try to bring scenes alive and you use present tense. ये हम यूज करते हैं. अभी A1 A2 के लोग सोच रहे होंगे सर पास्ट को A1 में आपने प्रेजेंट में बोल दिया, ये गलत है. They have no idea ये सही है. I'm just dramatizing the things, just creating the picture scenario. कोर्ट में कैसे यूज करेंगे इवेंट्स को जज के सामने? प्रेजेंट में.
भले ही वो पहले हुआ था, Hmm. तो कोर्ट में ताकि जज कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट? इट्स मोर लाइक पीपीटी, प्रेजेंटिंग पीपीटी लाइव, विदाउट एनी मशीन्स. So that is where you use present even to. चलो never mind. Okay. सर एक इस लाइन का ना इंग्लिश मीनिंग बताना. jamais apprendre même si je ne réalise pas encore l'importance réelle d'étudier. Real d'étudier. So the line you said वो text में लिखा हुआ है, right? जी. So can you repeat once again? थोड़ा सा clear. jamais apprendre même si je ne Jamais or réalise. jamais? Jamais. What is jamais? Jamais like I like to learn. No, jamais is never. Gem. Gem. Jamais का form है. AIMAIS. So jamais क्यों पढ़ रहे हो? It's jamais. Jamais. Jamais मतलब होता है never, never ever. Jamais, no plus jamais. Je ne fume jamais. I never smoke. It's one, that one, ठीक है? So je क्या है sentence? Jamais apprendre même si je ne réalise Stop. pas encore l'importance réelle d'étudier. Understood. So I used to learn. I used to learn, right? At the same time, MEMC is the term. MEMC. At the same time, I was not able to understand. I was not knowing the real importance, real, value of, apprentissage. I didn't know why we are learning it at all, but I still used to go to learn. Understand? LKG, MEMC UKG में means हमें at the पता same थोड़ी ना होता time. है क्यों पढ़ा रहे हो ये सब. But we still learn. Maybe with force, with with some appeasement, chocolate देके पढ़ाते हैं कि चलो पढ़ लो तो ये देंगे. But we don't know the real value why we are doing it. But we start learning before we understand why we are doing it. So the system does not wait for you to understand, because this is considered that once you start learning, you will get to understand it very soon after a few years, or of course not in few months, but in upcoming years you'll be able to understand why we are doing it, and later on we understand it, right? More or less we accept, yeah, it was important, we had to, we had to had it, right? It's important. So that's the meaning of the clear. देखा? मैं पढ़ दूं क्या एक बार आपके लिए वो सारे पैसेज? Yes, please. श्योर. देखो, सो मैं पहले पढ़ूंगा A1 वालों का टेक्स्ट, ठीक है, जो मैं A1 के लिए लिखा हूँ बिगिनर्स के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है. सतवीर, प्लीज हियर दिस आउट. Yeah. ये बहुत बेसिक है. Ma vie scolaire, pour A1 et 2 के लिए जो मैंने लिखा है फॉर्म. Ma vie scolaire est importante pour moi. Je vais à l'école depuis mon enfance et j'aime apprendre des nouvelles choses. I love to learn new things. Right? L'école est un lieu où j'étudie. School is a place where I study, où je rencontre mes amis et où je découvre le monde. Quand j'étais petit, j'allais à l'école tous les jours avec mes amis. J'aimais mes professeurs car ils étaient gentils et patients. Right? इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम पास है. À cette époque, je jouais avec mes camarades pendant la création et je faisais mes devoirs à la maison. Plus tard, j'ai commencé à comprendre l'importance des études. J'ai appris à lire, à écrire et à compter à l'école. Grâce à mes enseignants, thanks to my tutors, j'ai amélioré mes connaissances and I developed my connaissance, मतलब understanding, knowledge, et j'ai gagné plus de confiance en moi. I got the confidence in me. Aujourd'hui, je vais à l'école régulièrement et je fais de mon mieux pour réussir. I try my best to succeed. J'aime certains métiers comme le français, car c'est une langue essentielle, intéressante et utile pour l'avenir. À l'avenir, je voudrais continuer mes études et je veux avoir un bon travail. Je pense que l'école m'aide à construire mon avenir et à devenir une meilleure personne. Compris la manière, le sens de ce texte? Vous avez compris?
मीनिंग समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? मीनिंग भी तो समझ आ रहा है, फोनेटिक्स प्लस मीनिंग दोनों। सतवीर, कुछ कुछ हैं वर्ड्स जो हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा पता है, बाकी अच्छा तो अच्छा, चलो। लेट मी रीशेयर दिस वन, जस्ट अ सेक। नहीं समझ आ रहा है आपको? ओके, मैं पढ़ता हूँ फिर आपके सामने, ठीक है? जो वर्ड्स नहीं पता है प्लीज लेट मी नो, कोई बात नहीं, it's okay. होता है, कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो नहीं पता होते। बताओ, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? Ma vie scolaire est importante pour moi, right? Je Yeah, vais à it's okay. l'école depuis mon enfance, my childhood. I'm going to school since my childhood. Et j'aime apprendre des nouvelles choses. इसमें से सब पता है, right? Nouvelle, Nouvelle nouvelle. is an adjective. Nouvelle chose is new things. Okay. New things. And why we are putting this adjective before noun, like English? It's an exception, of course. In French, we put adjectives after noun generally, right? That's the idea. Mm. But in this case, exceptionally, we are doing it even before the noun, right? Nitika को तो पता है ये सब. I'm just moving to next line. L'école est un lieu, is a place où j'étudie, où je rencontre mes amis et où je découvre le monde. क्या नहीं पता इसमें? सर je découvre means Je découvre means I discover the world. discover. Okay. Le Découvrir. monde means world. Yes. And tout le monde means everybody, right? मैंने बताया था ये. We did Yes. talk about this in the class also. Satvir also. Satvir, in your class also I said. Monde is people, world. But tout le Monde, monde yeah. is everybody. So it's okay. Try to remember things at first. But yeah, if you forget, we'll repeat it. Quand j'étais petit, when I was kid, it's a imperfect condition, right? So describing past, we use imperfect. You know, describing a background in past is imperfect. Quand j'étais petit, j'allais à l'école tous les jours avec mes amis. When I was kid, I used to go to school every day with my friends. With my friends. Avec mes amis, avec mes parents, with my parents, or whatever. I mean, just saying how avec can be used with other cases. Avec, you know. Professeur, avec mes amis, avec les étudiants. Okay, j'aimais, it's not jamais, Nitika, it's j'aimais. I used to love. Like, J'aime. j'aimais mes professeurs, car il était gentil et patient. Clear? They were kind and My patient. professor. À cette époque, époque you must not be knowing. Yes. Epoch, English word भी है epoch. नहीं है? I don't know if है या नहीं. I don't know. 'Cause sometimes I feel कि I know the French word and I think it must be existing in English also, At but I don't know. this time. Time, yes. Epoch is in English also, I think. Yes, it's At relevant this to time, epoch. at that era, at that time. Era. Okay. Epoch. It's So as it, because it's describing the past, it does not literally means era, but at that time basically. Asset epoch. जिसे हम बोलते हैं ना, प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? आज मोमो, actuellement. उसी का समझो पास्ट फॉर्म है ये, एग्जैक्टली उसी का पास्ट फॉर्म है. À cette époque, je jouais avec mes camarades pendant la récréation et je faisais mes devoirs à la maison. Clear? Récréation, c'est une activité de leisure, comme jouer les sports, faire les activités, mais pas des études. C'est une activité, extracurriculaire, that we call. That's la récréation. Joas. What is Joas? Jouer, it's Jouer. coming from jouer verb, to I play. used to play. I used to Okay, play. play. Okay. Yeah, It's so it's past past of form. that. Yeah, it's imperfect form, and there are multiple past tenses, not just one. So you might not be still clear with passé composé, imparfait, plus que parfait. There are three past tenses, but two of them are being used most of the time here, like passé composé and imparfait. Imperfect कब use होता है, नितिका? सर जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, पास्ट बैकग्राउंड mostly- सेटिंग करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, सीन सेटिंग करते हैं. ड्रामा के लिए if I'm just setting a scene, I'm saying कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा था, so that is your scene setting, and we use background setting के लिए imperfect, not passé composé. We use passé composé once we want to describe one time happenings in the past. कोई event जहाँ से start हुआ और खत्म हुआ, we know that is your passé composé, isn't it?
Yes. And empathy, where we don't know the start and ending, it's more like a description. Weather was nice, I was kid, I used to go to temple, I used to go to school. We don't know when did you go, went, how many times. We don't know actual event. And when you the action ended, we don't know. It's more like a background description. You're just talking about it, right? Without any perfect description. But अगर मैं बोलूँ कि I went to school last week, so it's more clear कि एक बार या दो बार या 3 times या 5 times per week I went to last week, right? So now it gives a clarity कि हुआ था. But if I say कि होता था, used to happen, it's not clear, right? Not that clear on the timeline, on the tense. That's why we call this tense as imperfect tense, right? Imperfect, है ना? You guys know that. Nitika, you know that. Please. So we will be coming to that topic in A2 very soon. Okay. Ok, let's move ahead. Quand j'étais petit, j'allais à l'école tous les jours avec mes amis. J'aimais mes professeurs car ils étaient gentils et patients. À cette époque, je jouais avec mes camarades pendant la récréation. During, pendant is an important term. Highlight कर लो, लिख लो. Pendant la récréation, je faisais, faire verb का conjugation है, faisais mes devoirs à la maison. I used to do my homework at home. Next line. Plus tard, use ये भी note कर लो. Plus tard means later on. Means moreover. Yeah, moreover. Yeah, in addition to, en addition, plus tard. Yeah. Moreover, यहाँ later times में. ये class में. लेटर टाइम आएगा सर इसका या Yeah, लिटरल plus मीनिंग तो plus tard is yeah later. You know, after some incoming future. लेटर. Plus tard. जैसे बोलते हैं ना आप plus tard. Bye bye. See you. यस सी यू लेटर जी. आप plus tard. It's the same expression coming from this word. आप plus tard. Means see you later. And this plus tard is simply later. Later in times. तो ये कुछ कहना समय चाहता है बाद. लेटर टाइम आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज. यस, कुछ समय बाद. हिंदी में मूवीज में लिखता है नीचे कुछ समय पहले, कुछ समय बाद. वेरी जनरल, राइट? वी डोंट नो कितने समय बाद, बट जस्ट कुछ समय बाद. ठीक है, क्लियर? It's not in addition of, it's not exactly ki complementing to that up above, but it's just saying ki later in times. Plus tard. J'ai commencé à comprendre l'importance des études. Later मुझे समझ में आया कि it's important to study. Studies are so important. J'ai appris à lire. I understood. I learned to read, to write, and also to à compter. Compter is Computer. computer तो compete. कभी भी नहीं है. Computer. Compute. पते आले कॉल एंड टू compete at school. कंप्यूटर तो compter से होता ही नहीं है. of the nature. They compete. Compter is to count, calcul, statistics. Okay. Calcul is the subject of statistics, and compter is a Okay. verb means to count. Calculate. Yeah, to count basically. To count. I learned to count basically. Mathematics का basics मैंने सीखा. It simply means I learned to count. जोड़ घटाओ ये सब जो हम हिंदी में करते हैं, additions and all. That's what he learned here. Grâce à mes enseignants, thanks to my teachers, j'ai amélioré, I improved. This is passé composé, right? Once event, one point of event. J'ai amélioré mes connaissances, my knowledge. J'ai gagné plus de confiance en me. I won. I got the confidence in me. Aujourd'hui, today, nowadays, at this point, je vais à l'école régulièrement. Now I go to school very regularly, frequently. Regularly. Je fais mon mieux pour réussir. I do my best to pass, to succeed. J'aime certaines matières comme le français. I love some of the subjects like French because car is important. Because it's a conjunction, right? Car, and it means because only. कारण पार्सक से Parce que. That means because. Car used, because. in case of you're adding two clauses together, right? Car. And parce que is just after, in the same clause, you are adding the reason of happening of that, right? J'apprends le français parce que je veux passer l'examen. And car, j'apprends car and then situation, दो clause होता है, उसको add करने में car use होता है, ठीक है? Almost has the similar meaning, similar uses. Not exactly same, but parce que and car are similar.
in that way because both try to attach to different ideas together. सेच्यून लैंग मतलब या फिर रीजनिंग भी ऐड करते हैं, नॉट डिफरेंट आइडियाज, समटाइम्स रीजनिंग वजह को भी ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट में. तो car c'est une langue intéressante et utile pour l'avenir, interesting language and useful for future, है ना? À l'avenir, in future, Util pour l'avenir means? useful in future, for future. Utile is utiliser is to use, utile is useful, and l'avenir is avenir is what is avenir? Future. Future. ठीक है. Venir आपको verb याद होगा. Venir means to come, Yes. and avenir means whatever is awaiting to come is basically future. Okay. This is how I Okay, see it. I don't know. Lavanir is future Yeah. Yeah. or future. Pour Future time. Lavanir. Okay. Shall I move ahead? Yes, please. À l'avenir, je voudrais continuer mes études et je veux avoir un beau travail. In future, I would like to continue with my studies and would love to get a good job, good quality job. Je pense que l'école m'aide à construire mon avenir. I think school has helped me build my future and become a better person. Devenir une meilleure personne. Meilleur is better. Comparative में हमने पढ़ा था नितिका, superlative, comparative में ये पढ़ा था. Yes, sir. Meilleur, 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 or le best. meilleur, the best. But this term is better actually, and le meilleur is the best. ठीक है? So you cannot say कि मैं best हो गया हूँ, but he's saying I've become better. Okay, clear? जी. ये हो गया. और दूसरा ऊपर का पैसेज जो है ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है. मैं पढ़ लेता हूँ एक बार. We have 5 minutes more. Ok, ma vie scolaire a profondément influencé mon parcours professionnel, personnel and professionnel. यहाँ पे थोड़ी difficulty ज़्यादा है सप्रीत, so if you don't understand few things. Sir, parkour. Parkour is a course. It's a course or period of learning. Parkour is basically duration of some learning course, basically. So ma vie scolaire a profondément influencé my parkour professional, my my parkour is basically यहाँ पे it's to indicate your personal life, path, basically pathway. ठीक है? So it has influenced your life, your personal pathway and professional path. Depuis mon enfance, since my childhood, l'école a toujours occupé une place centrale dans ma vie. Central of my life, gravity of my life. School was always gravity of life mine since my childhood. Non seulement en tant que लिख लो इसको. Non seulement, not just en tant que lieu d'apprentissage, mais not just as a place of learning, but mais aussi comme espace de construction de ma personnalité, but also a space where my personality was being built. My personality was. means? तो कोई we are using just like हम ये term use करते हैं नितिका, come toi, comme moi, comme lui, like this, like that, like him, like her. That's exactly on to is. But yeah, it's little advanced. Com is for beginners and onto is for advanced learners. So you now you can replace com. No more uses of com. Okay, it's like very, it sounds जैसे very बोलते हैं. big. Okay. Onto ठीक है. तो कम हम यूज करते हैं बिगिनर से स्टैंडर्ड पे A1 A2 पे. अब ऑथो का इज मोर एडवांस, वेरी एडवांस. चेंज कर दो आप इसको. ओके, मैं aussi comme un espace, देखो कम भी यूज किया है यहाँ पे. Also un espace, right? De ma construction, dans ma personnalité, quand j'étais à l'école primaire, primary school, j'aimais apprendre, même si at the same time, je ne réalisais pas encore l'importance réelle des études. When I was at primary school, I love to learn. I used to learn, but I didn't know exactly why we are learning it. I didn't know the importance. I didn't realize the importance of the real importance of this studies. MEMC means at the same time. Yeah, MEMC is, yeah, MEMC.
At the same time, matlab, simultaneously I was not grabbing the idea of doing it. I was not getting it why I'm doing it. But even though I like to learn, but I didn't know why I'm doing it. The reason, the importance, I was not well aware of it. MEMC used to indicate at the same time some simultaneity between two things. And also you can use this term reference, word reference, please just put this word and try to add more examples with MEMC. MEMC is like at the same point in time. Okay. Shall we move to next? Yes. À cette époque, je passais beaucoup de temps avec mes camarades et je participais activement aux activités scolaires. Clear? No need of translation, I think here. Yes. Cependant, note it down. However, right? Although. Cependant, il faut dire que, I must say that, it must be pointed that, il faut dire que je n'étais pas toujours conscient des efforts que mes enseignants faisaient pour nous transmettre des connaissances solides. It must be highlighted here that I was never, aware of the efforts being placed by the teachers on us to build a strong foundation for us, or to build basic foundation, solid foundation for of knowledge for us. So पौधों को क्या था सर? However, although, however, cependant, plus tard, later in time, yeah, let it go. Saying something? नहीं मैं रीड ही कर रही थी. अच्छा पढ़ लो. Il faut dire que आप पढ़ो, आप ही पढ़ो. I'll just translate. Cependant, il faut dire que je n'étais pas toujours conscient des efforts que mes enseignants faisaient pour nous transmettre des connaissances solides. To transmit to us the solid foundational knowledge. New transmit to transmit to us, not new transmit. We are not transferring. It's used as COD/COI, right? So they transferred into us a new, the solid, knowledge. Okay, so they can transmit solid knowledge in us. They can, they did. They used to do. They can थोड़ी ना fair verb use है ना फैसे they used to do. It's not about their ability to do it. They are already doing it. They were doing it, and that's what he is appreciating now. Okay. Okay, plus tard, later times au collège, at college level, j'ai commencé à comprendre que la réussite scolaire demandait de la régularité et de la discipline. Regularity and discipline is the key to succeed. Okay, next. J'ai fait face à plusieurs difficultés, mais j'ai réussi à les surmonter grâce au soutien de mes professeurs et de ma famille. Ma famille. What does it mean? Okay. I used to face many difficulties, but I faced, succeeded. not used to I face. faced. J'ai fait. I got lot of difficulties during that day. So Yeah. I had difficulties, lot of difficulties, but But I succeeded. Yeah. Surmonte means ale surmonte. Surmonte is to resolve, to surpass, to just resolve down, to solve it. Surmonte is to किसी चीज पे achievement कर लेना, to something that you achieved. So surmonte is to get over with something. Okay. Grâce au soutien de support of my professor and my family. Yes. Soutien is more like a support, more like a assistance. Support. Okay. From my professor and my family. So I was able to achieve or surpass all those problems during my college with the help of my teachers and my family. Hope it's clear. Yes. Move ahead. Exactly.
Ok. Avant d'entrer au lycée, j'avais déjà développé de bonnes méthodes de travail, ce qui m'avait permis d'obtenir de meilleurs résultats. What happening is, समझ आया? Before entering high school, I already used to develop the good methods of Used to working. नहीं, here it means I already Aave, had developed Jave, Deja. I have already developed the like good methods of working to techniques. work. Method means technique or ways Techniques. out of work. Okay. Ce qui m'avait For me, allowed me to gain, obtenir is to gain good in results. the best बढ़िया result. result. Resultant. ठीक है. Plus के पास पे यूज कर लिया. This is also a past tense, है ना नितिका? Plus के पास पे Past past of in past. past in past. Yeah. जी. Yeah. Au lycée, je travaillais avec plus de sérieux. Plus de sérieux means? Plus de, like with more seriousness. Yeah, I think it's the same. Yeah, it's avec plus de sérieux. Yeah. car je savais que c'est année allait jouer un rôle déterminant dans mon avenir. mon avenir. Liaisons वगैरह नहीं Mon करते हो आप? avenir. लिएजो ध्यान रखो. से जाने, आपने से आने पढ़ा. And all these liaison you are missing. Okay, ठीक है, understood? ठीक है. So you understood that it's gonna play a very important role in a role in your future, so that you started being very focused. Wow. Okay, next. C. Si je n'avais pas fourni autant d'efforts pendant cette période, je n'aurais pas acquis les compétences qui me servent aujourd'hui. Okay, where we are. Conditional passé. Yes, conditional passé. So ये conditional में चला गया sentence. So ये बता रहे कि क्या होता अगर नहीं करता तो. So it's now conditional passé. Oh, कंडीशनल पास नहीं ना हुआ सर अभी. नहीं हुआ. हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. Hello. जी सर. Grâce à la vie scolaire, j'ai appris à gérer mon temps, à travailler en équipe et à accepter la critique constructive. Il est essentiel que les élèves soient conscients du fait que l'école ne se limite pas aux examens et aux notes. Subjunctive present. Subjunctive है. Il est essentiel que, इसकी वजह से हो गया ये subjunctive. It is necessary that some sort of obligation being presented, right? Il est essentiel que, il faut que, Yes. il est nécessaire que. Isn't it a subjunctive form? क वाली टर्म्स आ गई. अभी यस हमने सर. पढ़ा है. अभी पिछले वीक हम पूरा subjunctive ही पढ़ रहे थे, right? So ये मेरे को नोटबुक में लिखना ही पड़ेगा फिर. ये ऐड करो, बिल्कुल ऐड करो. जितने एग्जांपल्स कलेक्ट करोगे you become better. चलो नेक्स्ट. Il faut que le système éducatif encourage les jeunes à développer leur esprit critique et leur autonomie. Autonomie means? Independence, autonomy, liberté, freedom. Okay, so autonomy that you means can freedom. operate alone, a standalone. You can operate in solo. Okay, Autonomy okay. brings you, that you can operate standalone. Aujourd'hui, je considère que la vie scolaire m'a préparé aux défis de la vie adulte.
today I considered that the school life prepared me to Defis means To define my adulthood, to define my adult life. okay, Yeah. define about my Definir is adult specifically. life. Okay, les les expériences que j'ai vécues à l'école ont renforcé ma confiance et moi et ont façonné ma vision d'avenir. It's not facone, it's And façonne. Cedier is there below. yes, façonné. Façon is a method, a way, right? Façon. Façonné. Bon façon, good way, right? So, façon is more like a method en français, méthode, façon, technique, etc. Okay. So what is the meaning? Les expériences que j'avais vécues, that I lived at my school, reinforced my confidence and help me bring the vision for future. Okay. Okay. I'm just trying to find this word again, defi. What is defi? Just trying to understand if it's exactly same or not what we said. Oh, defi Which is more one? like a challenge. Defi. Up above. Or defi Defi. dala the adult, all those difficulties Okay, at adult defi. life. So next. Next line. Okay. À l'avenir, lorsque j'aurai terminé Etude. mes études, Mes études. mes études, je suis convaincu que je me Convaincu. यहाँ पे सिद्धि थोड़ी ना है. convaincu. Yes. Je suis convaincu que je me rendrai compte à quel point l'école m'aura apporté bien plus que de simples connaissances académiques. Très bien. Future interior हो चुका रहेगा. क्या हो चुका रहेगा? À l'avenir, lorsque j'aurai terminé, जब तक मैं अपने स्टडीज कंप्लीट करूंगा, so in future, by when I'll complete my studies, je suis convaincu, I'm very convinced that I'll be able to, je me rendrai compte à quel point l'école m'aurait apporté bien plus que des simples connaissances académiques. Yeah, it's more like by the end of these studies, with these studies, I'll be able to I'm convinced that I'll be able to, Rondre is to bring, will be able to brought uh, some, valid, learning, which basically, indirectly brings me more, knowledge, more connaissance about the academics, about the, studies, about the, higher studies and all. Academic is, of course, generally, academics are generally referred to, studies ka higher level ladder, हाँ यार ओके academics. ओके एकेडमिक ठीक है. ठीक है Clear? Fine. Tatvir, Nitika, कुछ Yes. observation है? Some learning, some words, some expressions. जितना क्लासरूम में नहीं सीखते आप, उतना फ्री लर्निंग में सीखते हो, ये पता है ना? जी क्लासरूम इज समथिंग बोरिंग स्पेस. मतलब लर्निंग तब होती है जब कुछ लिमिट नहीं हो एंड टॉपिक डिसाइडेड नहीं हो, तो ज्यादा बेहतर होता है. तो या एनीवेज, इसीलिए मैं बोलता हूँ डू सेल्फ लर्निंग एज मच एज यू कैन, बिकॉज सेल्फ लर्निंग is something even I cannot replace it. I mean, even if I do not do self study, I find it difficult. So self study is something core. इसके बिना तो ये सब classes useless हैं, grammar and all, ये सब कुछ नहीं है. Anyways, I hope you found your value here. And so anything else? Voulez-vous ajouter quelque chose, Tajveer? No. How do you find it? Advanced? Yeah, it's Hey, advanced level. But the problem, Nitika also started with with us with A1 only. इन्हें कुछ bonjour तक नहीं पता almost, or I don't know if she knew it, but that's it, right? Now यस she is able to speak for 20 minutes, 30 minutes. मतलब इनको दे दिया जाए तो ये पूरे क्लास बोल सकती हैं, which is a good thing, which I really appreciate. So it does not, it's not has not to be that complex also, right? Nitika कितना simple रहा है क्लास, क्या complexity है?
अभी तक का सर मतलब मेरे को इतना पता भी आई कैन डू इट, बस मेरे को टाइमिंग का ही इश्यूज है क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है इस लैंग्वेज में। जब मैं आई इज थी यहाँ पे इंटरेस्टिंग। तो मैंने जॉब भी स्टार्ट नहीं करी थी, तो मेरे को ये होता था, मेरे को लग रहा है मैं दिन में भी वो आपने एक वो था ना जहाँ पे वो पॉडकास्ट थे जहाँ पे बेसिक ही सिखाते हैं प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, तो मैंने वो स्टार्ट करे थे। तो फिर बाद में जॉब जब स्टार्ट कर ली फिर तो बस मतलब हार्डली आई गेट अ टाइम, तो फिर ये प्रॉब्लम है। बाकी तो मेरे को इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है ही। नीतिका, डे 1 याद है आपको? हमने जब क्लास स्टार्ट किया था, डे 1, जी राइट? कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है यहाँ पे, हाँ नीतिका? बिल्कुल बिल्कुल पूरा कंफ्यूजन, पूरा क्योस, पूरा बिल्कुल। ड्रामा था। फर्स्ट डे, फर्स्ट फ्यू डेज ऐसा आई लग रहा मीन था वाज नॉट, सिर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ, नहीं समझ आ रहा। इट्स सर के हार्ड टू ऊपर लर्न से जा अदर रहा लैंग्वेज। था। अच्छा, अब आप तो पढ़ा भी सकते हो किसी को, राइट? कैसे काम नहीं नहीं सर, अभी नहीं अभी नहीं। अभी नहीं। अभी अभी बस सेल्फ लर्निंग करनी है, अभी खुद को ही पढ़ा लूं। That's good, that's good. पहले हाँ सही बात है। सेल्फ एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मैं आज भी सीखता हूँ, खत्म नहीं हुआ है मेरा भी कोर्स। बिल्कुल सर। आप मानोगे नहीं, मैं हर दिन कुछ पढ़ता हूँ, हाउ ट्रांसलेशंस वर्क, थियरीज हैं, बहुत सारे थियरीज हैं ना, साइंटिफिक थियरीज है जो आईआईटी में है कि ट्रांसलेशंस के क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। अभी भी आप लोगों को बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं पता कि ट्रांसलेशंस की क्या थियरीज है, बिल्कुल आप लोगों को कोई आइडिया नहीं कि आप लोग जानते हो ट्रांसलेशन मतलब गूगल ट्रांसलेटर, बट देर आर मेनी मोर थिंग्स इन ट्रांसलेशन। अगर किसी को ट्रांसलेटर बनना है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे तो यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास एक प्रॉपर बुक है उसकी, मैं वही पढ़ रहा हूँ आजकल। तो ट्रांजिक्टोलॉजी, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, mot à mot, word to word, and there are transmettre de connaissance d'une message. Aussi il y a autre méthode qu'on dit comme रिक्रिएशन, रिक्रिएशन बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया, रिक्रिएशन। उन्होंने बुक को ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने रिक्रिएट कर दिया, मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा, एक्सप्रेशन, स्टोरी भी बदल जाएगी, मतलब जस्ट इंस्पायर होके कुछ बना दिया मैंने अपना। तो इसको बोलते हैं रिक्रिएशन, इट्स नॉट अ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में बहुत सारे कुछ रूल रेगुलेशन है, बट स्टिल वी से कि अ ट्रांसलेशन कैन नॉट बी अ स्लेव ऑफ वर्ड्स। ट्रांसलेटर यस शुड नॉट बी स्लेव ऑफ वर्ड्स. He can be master as long as he is able to maintain the connaissance, the meaning, the manière de présentation, the message. May there are things I mean to understand, because degree का variation अभी भी mention नहीं है, ये अभी भी R&D में ही है, because ये human based चीजें हैं, we cannot control it. No one knows कि कितना deviation allowed है, but yeah, less deviation we consider more pure, and more deviation we consider less pure. Yeah, अगेन ये ट्रेजिक्टोलॉजी अपने आप में एक पूरा थ्योरी है, पूरा सब्जेक्ट है, बट या एनीवेज, so get interested about something in French, कुछ भी, फ्रेंच का cuisine, culture, maybe how language works, कुछ भी, get interested into something and start, choose a topic, maybe politics, maybe history, science, आपको जो भी फेवरेट है सब्जेक्ट या जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है उससे स्टार्ट कर दो। किसी भी न्यूज चैनल पे जाओ, उसका रूब्रिक ओपन करो और अपने थीम्स को चूज करो। मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है तो ओपन करो इकोनॉमिक्स का टॉपिक एंड सी हाउ रेपो रेट इज वर्किंग, राइट? हाउ फॉरेक्स इज गोइंग अप एंड डाउन, राइट? गोल्ड रेट एंड ऑल, या ça dépend. D'accord, c'est la fin de la course d'aujourd'hui. ठीक है, Yeah. ओके मिलते हैं सर, नेक्स्ट टाइम। d'accord, Okay. merci Yeah. beaucoup, À lundi. Au revoir. Alandi, yeah, Bye. bye. Everyone. Bye bye.